Students, now we have to find the envelope of family of curve y is equal to mx plus under root a square m square plus b square, where m being the parameter. Here we have to find the equation of envelope of the given family of curve. आप देख सकते हैं यहाँ पर given family of curve की इक्वेशन है y is equal to mx plus under root a square m square plus b square, where m being the parameter. यहाँ पर m कोई पैरामीटर है और ये given family of curve की इक्वेशन है और इस given family of curve का envelope फाइंड करना है. So first we find out here, first we solve this. So this can be written as y minus mx is equal to under root a square plus m square a square m square प्लस बी स्क्वायर. आप देख सकते हैं गिवन फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन में mx को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफॉर्म किया है तो ये माइनस का mx हो गया. सो हियर वी ट्रांसफॉर्म दिस mx इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस विल बी रिटन एज y minus mx is equal to under root a square m square plus b square. Now we squaring both sides, squaring both sides, दोनों साइड का स्क्वायर कर रहे हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज y minus mx होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a square m square plus b square. When we apply here a minus b whole square, so this can be written as y square plus m square x square minus 2mxy. On the right hand side will be square of this under root a square m square plus b square, so this is square root sign removed, so this can be written as a square m square plus b square. आप देख सकते हैं इसमें बोथ साइड का स्क्वायर किया गया है, लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस b का होल स्क्वायर से अप्लाई किया गया फार्मूला. सो a स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस इज 2y मल्टीप्लाइड बाय mx. On the right hand side when we square of this under root a square m square plus b square, so this is square root sign removed. So this equation can be also written, this a square m square transform in the left hand side, this b square transform in the left hand side, so this can be written as m square x square minus a square m square minus 2mxy plus y square minus b square इक्वल टू 0. आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड से a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म किया गया है. सो दिस a स्क्वायर m स्क्वायर ट्रांसफॉर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड गिव्स माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, and this plus b square transform in the left hand side, so it gives minus b square. Now we taking common here m square in these two terms, so this can be written as x square minus a square m square minus this is 2mxy plus y square minus b square is equal to 0. So here we can see that this equation of family of curve is quadratic इन पैरामीटर m. आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व की इक्वेशन थी फैमिली ऑफ कर्व की वो थी y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो वी ट्रांसफॉर्म दिस mx इन द लेफ्ट हैंड साइड, इट गिव्स y minus mx is equal to under root a square m square plus b square. Now we square both sides, so this can be written as y minus mx whole square is equal to under root a square m square plus b square whole square. Now we apply formula a minus b whole square in the left hand side, so this can be written as a square plus b square minus 2ab, so this can be written as y square plus m square x square minus 2mxy. On the right hand side when we square of this under root a term, so this square under root sign will be removed, so this can be written as a square m square plus b square. Now we transform this a square m square plus b square in the left hand side, so it gives minus a square m square and this minus b square. Now we taking common m square from these two terms, we get x square minus a square m square minus 2mxy plus y square minus b square equal to 0. So this is the quadratic equation in parameter m. So this is quadratic in parameter m. पैरामीटर m. आप देख सकते हैं जो गिवन कर्व की इक्वेशन है वो पैरामीटर m में क्वाड्रेटिक है. सो इक्वेशन ऑफ एनवेलप ऑफ दिस कर्व कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन ऑफ एनवेलप ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व 1
can be written as b square is equal to 4ac, where b is the coefficient of b is the coefficient of m, and a is the coefficient of m square, and c is the constant term. So here b can be written as minus 2xy. Here b is the coefficient of m. So this is minus 2xy whole square is equal to 4, and a is here, that is the coefficient of m square. So this is x square minus a square, and c is here y square minus b square. आप देख सकते हैं जब भी गिवन कर्व की इक्वेशन, अगर फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन क्वाड्रेटिक है पैरामीटर में, तो उसकी एनवेलप की इक्वेशन b स्क्वायर इक्वल टू 4ac होती है। यहाँ पर b जो होता है ये पैरामीटर m का कोफिशिएंट होगा, कैपिटल A ये पैरामीटर m स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और कैपिटल C दिस इज द कांस्टेंट टर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी सॉल्व दिस, सो माइनस स्क्वायर इज प्लस 2 स्क्वायर इज 4 x स्क्वायर y स्क्वायर, here we multiply this 4 and this 4 can be, and here x square multiplied by y square we get x square y square, x square multiplied by minus b square, so we get minus b square x square, minus a square multiplied by y square, so this is minus a square y square, this minus a square multiplied by minus, so this is a square b square. Now this 4 is cancelled by this one, so this can be written as x square y square is equal to x square y square minus b square x square minus a square y square plus a square b square. So we can see here this x square y square cancelled by this x square y square. Now this b square x square transform in the left hand side, so we write this b square x square, and this minus a square y square in the left hand side a square y square, and in the right hand side a square b square. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोथ साइड से कैंसिल हो गया, एंड दिस माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ट्रांसफॉर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड दिस गिव्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर. Similarly, minus a square y square transform in the left hand side we get plus a square y square, and the right hand side a square b square. Now we divide this whole equation by a square b square. So this is b square x square divided by a square b square. This is a square y square divided by a square b square, and on the right hand side a square b square divided by a square b square. आप देख सकते हैं इस होल इक्वेशन को a square b square से डिवाइड किया गया है इस टर्म को. So this b square cancelled by this b square, this a square cancelled by this a square, this a square b square cancelled by this a square b square. So this can be written as x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. And also we know that this is the equation of envelope. This is equation of envelope of given family of curve. And also we know that this is the equation of ellipse. आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. ये इस गिवन फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का एनवेलप की इक्वेशन है, और हमको पता है कि ये इलिप्स की इक्वेशन होती है जिसको हम दीर्घवृत्त कहते हैं. सो here we can see that the given equation y equal to mx plus under root a square m square plus b square, this mx transform in the left hand side, this gives y minus mx. Now squaring both sides, so y minus mx whole square is equal to under root a square b square plus b square whole square. When we apply a minus b whole square here, we write y square plus m square x square minus 2mxy. On the right hand side, when we square off this square side will be removed. Now we transform a square m square plus b square on the left hand side, it will be minus, so this is minus a square m square and this is minus b square. Now we taking common m square from these two terms, we get x square minus a square in the bracket, and this is minus 2mxy plus y square minus b square. We can see here this is the quadratic equation in parameter m. आप देख सकते हैं ये given equation फैमिली ऑफ कर्व की वो पैरामीटर m में quadratic है. So we know that if the equation of family of curve is quadratic in parameter, so envelope of equation can be written as b square equal to 4ac, where capital B is the coefficient of m, capital A is the coefficient of m square, and capital C is the constant term.
So we write here coefficient of m, that is minus 2xy in place of b, and in place of capital A we write here coefficient of m square, that is x square minus a square, and in place of capital C we write here y square minus b square. Now we solve this. So minus square is plus 2 square is 4, x, y square is x square y square. On the right hand side this 4 is cancelled out and this brackets multiplied. So x square multiplied by y square, x square multiplied by b square, this gives minus b square x square, and minus a square multiplied by y square, we gives minus a square y square, and minus a square multiplied by minus b square, this is plus a square b square. Now this x square y square, this x square y square is cancelled out. Now we transform this minus b square x square minus a square y square. In the left hand side it will be plus b square x square plus a square y square. Now we divide whole equation by a square b square. So this b square is cancelled out, this a square is cancelled out, this a square b square is cancelled out. So we get here a square upon a square plus y square upon b square equal to 1. This is the equation of envelope of the given family of curve. Thank you.